Welcome to this IT Source YouTube channel. So this channel is dedicated to the tech tutorials. So please subscribe to this channel and press the bell icon. Hello everyone. So my name is Bhagiraj Singh and this is our another video for our Linux fundamental tutorial series. Okay. And today's topic we will discuss about the group administration. And in the previous videos in this series we have already discussed about the user administration part. Okay. So in today's video we will discuss about group administration. So in this video which we will cover these topics: group creation, how to create a group modification, okay, how to modify a group, adding or removing a members to a group, and removing a group or delete a group. Okay, so this is the group administration task. Okay, so let's start with the group. What is group? Okay, when you create a user, it always creates a primary group with a username. Okay, and it has a unique ID which is called the GID, group ID. Okay, तो हम इसको क्या बोलते हैं? यूनिक आईडी को ग्रुप आईडी. एंड इट ऑल्सो हैज़ वन कन्फिग्रेशन फाइल. जैसे आपका यूज़र वाले में क्या होता है, etc passwd था, तो यहाँ पे भी एक कन्फिग्रेशन फाइल होगी. तो कन्फिग्रेशन फाइल आपकी कौन सी है? /etc/group. ठीक है. अगर आप इसको कैट करके चेक करोगे तो आपको इसमें क्या मिलेगा? ग्रुप की इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि कौन कौन से ग्रुप ऐड हैं. ठीक है, और कौन कौन से आपके ग्रुप आईडी हैं. तो ये वाली मेरी ग्रुप आईडी है, ये मेरा यूज़र का प्राइमरी ग्रुप है लिनक्स. ठीक है, यहाँ पे भी मैंने एक यूज़र 1 करके क्रिएट किया हुआ है. तो इसका ग्रुप कौन सा है? 1006, इसका 1002 एंड इसका 1003. इस तरीके से ये यूज़र क्रिएट हो रखे हैं यहाँ पे. ठीक है, हमें पहले ग्रुप क्रिएट करना है. यूज़र ये तो प्राइमरी ग्रुप हो गया. ठीक है, तो हम ग्रुप कैसे क्रिएट करेंगे? ठीक है, तो आप ग्रुप क्रिएशन के लिए क्या करोगे? ग्रुप ऐड कमांड रन करोगे. ठीक है, सो वी विल रन दिस कमांड ग्रुप ऐड एंड द ग्रुप नेम. लाइक आई विल क्रिएट ए ग्रुप सिंगर. ओके, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? एक ग्रुप ऐड हो जाएगा. आप कैट करके चेक करोगे etc ग्रुप, तो आप यहाँ पे देखोगे कि आपको एक ग्रुप क्रिएट हो गया 1007 आईडी के साथ में. ठीक है, अब सपोज दैट यहाँ पे 1001, 1004 और 1005 ये आपकी ग्रुप आईडी क्या है? अभी खाली पड़ी हुई है, यानी कि आपको कोई भी डिफाइन नहीं है यहाँ पे ये वाली आईडी किसी भी ग्रुप को. ठीक है, अब सपोज दैट इनमें से आपको किसी ग्रुप को क्या करना है? अभी तो डिफ़ॉल्ट ले रहा है 1006 के बाद 1007 आ गया. अब आप सपोज दैट आपको एक डेडिकेटेड आपको क्या चाहिए? ग्रुप आईडी के साथ में ग्रुप क्रिएट करना है. ठीक है, सो हाउ कैन यू क्रिएट लाइक दैट? सो यू कैन रन दिस कमांड ग्रुप ऐड कमांड and -g option for the group ID, and you will mention the group ID 1005 and the group name like dancer, our group name. Okay, now you get this group etc group and dancer has the group ID 1005 जो कि अभी हमने मेंशन किया ग्रुप ऐड करते टाइम. ठीक है, सो लाइक दैट यू कैन क्रिएट ए ग्रुप. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मॉडिफाइंग द ग्रुप. अब मॉडिफाई करने के लिए कौन सी कमांड होती है? आप ग्रुप मोड कमांड का यूज़ कर सकते हो, ग्रुप मोड. ओके, अब क्या आपको ग्रुप आईडी चेंज करना है तो मॉडिफाई करना पड़ेगा. ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? -g ऑप्शन के साथ आप क्या कर सकते हो? जैसे मेरे को 1010 देना है, कौन से? डांसर वाले को. ठीक है, डांसर वाले ग्रुप को. ठीक है जी, तो अभी यहाँ पे हम चेक करते हैं etc ग्रुप करके. मैं यहाँ पे इसको ग्रैब कर लेता हूँ. वी कैन ग्रैप इट dancer. So dancer now have the 1010 group ID. Okay, so like that you can modify it. If you want to rename that group, okay, if you want to rename that group, so you can also run that group mode command --n for the new name. New name is suppose that the manager. We have another group manager. ठीक है, तो डांसर का हम ग्रुप नेम चेंज करने वाले हैं मैनेजर की तरफ. ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं चेक करता हूँ कैट etc ग्रुप में. तो अभी यहाँ पे मेरे को क्या दिख रहा है? डांसर दिख रहा है कहीं? नो, क्योंकि उसका रीनेम हो चुका है मैनेजर से. ठीक है, तो वही ग्रुप आईडी है जो डांसर की थी. तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? वी कैन रीनेम दैट एनी ग्रुप. ओके, सो इफ़ यू वांट टू add multiple users to a group or add a single user to a group, so how can we create that? If you want to create
if you want to add a multiple user to any group, so you can run that command, gpasswd command, with option -m. Okay, so I have user 1, user 2, so I want to add 2 users in the singer group, singer. Okay, now you can check etc group pipe grep space -i to pick out the word singer. Okay, so now user 1 and user 2 is already added to the singer. Which command? gpasswd command. Okay, so like that you can add multiple users to any group. If you want to add a single user to any group, so how can you add a single user? So you can run that command, gpasswd, with the argument space -a. I have user 3 and I want to add into manager group. Okay, manager, spelling mistake. Okay, so now you can grab manager in the etc group file. Now you can see the user 3 has added to the manager group. Okay, so like that you can create you can add a single user or a multiple user, or you can also remove any user from any group. So for removing, we can run this command, gpasswd with space with -d option, and I want to remove user 2 from the singer group. So like that you can remove any user from the group. Okay, now you can grab the singer. So now only one user has added to the singer group. Okay, and the last topic is, if you want to delete or remove any group, so which command you can run? Group del command. Group delete means group del command, and I want to delete the singer group. So you can check in the etc group. So singer group has removed from the etc group file also. Okay,